आपका नाम बिलाल है? यस। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। यस। अच्छा, और आप यहाँ दुबई में कितने साल से काम कर रहे हैं? 2001 में आया था। आप 2001 में आए? जी। अच्छा, और आप गार्डनर जब से काम कर रहे हैं, गार्डनर के तौर पे, माली के तौर पे? गार्डन में 8 साल हो गए। I'm Luswiminda Andam from Philippines. I'm working here in Dubai for my kids and their future. So hi everyone, my name is Omar and I'm 20 years old. I've lived here for approximately 17 years. And recently I've been in and out of the country, but otherwise it's a straight 13 year stretch over here. जी मैं पाकिस्तान से हूँ। जी। सियालकोट से, पंजाब से। अच्छा। और मेरा नाम है सईद। अच्छा, और आप यहाँ दुबई में कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 9 साल हो गए। आप लोग कहाँ से हैं, आप बता सकते हैं? पाकिस्तान से। बलम पेशावर में आया। पेशावर? पेशावर का है। आप भी पेशावर से? और आप भी? पेशावर। आप सब पेशावर से? आप कहाँ से? मैं भी मलाकंड। आप भी मालाकंड से? अच्छा। My name is Nadeem. I'm from Pakistan, and I spent most of my, let's say, half of my life in Pakistan. I left Pakistan when I was 26. I went to USA. I spent there 7 years, and in 1999, about 20 years ago, I came to this country, and ever since I've been living here. So that's what my background is, and I'm by profession I'm a medical doctor. नहीं, फैमिली पाकिस्तान में, यहाँ पर नहीं रख सकते। अच्छा, फैमिली नहीं है। फैमिली आपकी वाइफ और आपके बच्चे, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। जी। अच्छा, और वो सब मतलब पाकिस्तान में रहते हैं? जी, पाकिस्तान में। कहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में? पंजाब, डेरा गाजी खान में। How long have you been in Dubai? Almost 11 months, ma'am. Okay, 11 months. And you came from Qatar. You were working in Qatar before? Oman, ma'am. Oh, sorry, in Oman. Yes, In Oman. ma'am. 6 years in Oman. You worked for 6 years in Oman. Honestly, whenever anyone asks where I'm from, I just say Pakistani American. I really don't have an affinity with this place. I mean, I could tell people that I live here, but it's not concrete. It's not something that I tell people that, you know, I've been living here for a long time, so I feel like I belong here. I don't. I know that at some stage, you know, I will have to leave. Like for example, in my education, for the past 2-3 years, I've been coming in and out because I no longer live here. बस वो वही है ना, पैसे कमाने के लिए ज़ाहिर है घर छोड़ना पड़ता है, जिसे अल्लाह में इधर लिखा हुआ है। तो एक्चुअली वो है ना कि पाकिस्तान का आपको पता है, वैसे भी हमारी करेंसी थोड़ी सी डाउन है ना इधर की निस्बत, तो फिर इधर थोड़ा सा हम जितना भी कमाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा बन जाते हैं, पाकिस्तान कन्वर्ट हो गए तो बेनिफिट हो जाता है ये ना। पाकिस्तान में रह के इतना मुश्किल होता है, जैसे हम इधर अर्निंग करते हैं इससे, यानी कि उधर अगर हम 25-30 हज़ार कमाते हैं महीने का, तो वो एनफ नहीं है ना हमारी फैमिली के लिए। Yeah, to be very honest, I would put myself in a category of economic migrant. Yes. Where you look for, a better pay scale for your job that you do. But in addition to the salary that we get here, which is of course much better than my home country, my professional satisfaction is much more here in this place because of the facilities available for a lot of diagnostic and therapeutic part of the profession that I practice. रूम का 4,000-3,000 किराया है, हमारी सैलरी है तकरीबन 1500-1600, इतना कैसे रखेंगे? I have already job, ma'am, because our same in Philippines, they take me here in company. इधर तो बहुत एक्सपेंसिव है, महंगाई बहुत है इस वजह से ना। और आप यहाँ कैसे आए? मतलब आपके पास जॉब थी, नौकरी की वजह से आए, या मतलब किस वजह से अपना घर छोड़ के यहाँ आए? इनका रिश्तेदार है ना इधर, तो उन लोगों ने वैसा किया है, किसी का भाई है, किसी का कजन है। अच्छा। किसी का टूबी का बेटा है, तो उन लोगों ने इसके लिए वैसा किया है। You may say that half of my life I've been away from Pakistan, and most of it has been in this country. So I do have some sense of belonging to this place also. But I'm a realist because I know that even though I will have sense of belonging to this place, I can never be part of this place forever. तो आप क्या करते हैं? आप मतलब हर महीना वापस पैसे भेजते हैं? हाँ, वही पैसे भेजते हैं। अच्छा,
और आप कितनी दफ़ा मतलब साल में वापस पाकिस्तान जाते हैं उनसे मिलने के लिए? 2 साल बाद जाते हैं। 2 साल बाद? अच्छा, तो 2 साल तक आप नहीं देखते अपने? नहीं देखते, बात करते हैं, मत देखते हैं। It's very difficult, ma'am, because here is because so far of our family, and then we feel homesick like that, and here it's too much cold sometimes. Now that I've grown older, I know that I don't necessarily belong here because I know I can be asked to leave at any time, and if anything does happen, I will be going back to the US. पढ़ाई भी बहुत महंगी है, वैसे भी स्कूल का, मेडिकल, बहुत इशू है इधर। तो आप लोग यहाँ दुबई क्यों आए? बेहतर जिंदगी के लिए या पैसे कमाने के लिए? बेहतर जिंदगी के लिए भी आए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जॉब है नहीं कि मिल जाए। अगर हम लोगों को 10,000 भी पाकिस्तान में मिल जाते ना, तो इधर क्या है, किसके लिए आते हैं? घर सब अपना बाप बीवी सब कुछ छोड़ के, बच्चे छोड़ के क्यों आते हैं? You know, this place is very unique for migrants, very, very unique. And I think the part of the uniqueness of this place is because of the demography of this place, because I think about 80% of population of this country is expatriates. And about 30-40% I believe is Asians, and where Pakistanis play, a major role in the demography of this country. And so we feel, close to our home country, being an Asian. At the same time, the comfort that we enjoy here, at the same time, security that we enjoy here, at the same time, our cultural needs are met here. But at the same time, the society in general does not own you in a way that they would own you probably in some other place if you lived there for 20 years. बड़ा बच्चा है, तकरीबन 14 साल का। अच्छा, आपका बेटा 8वीं क्लास पढ़ रहा है। अच्छा, और सबसे छोटा? सबसे छोटा एक बच्ची है, 1.5-2 साल की। My son is already 15 years old, mom, and my daughter is 12 years old. ये सबसे बड़ा मुश्किल है, जो फैमिली से दूर है ना। आप क्या करते हैं? पैसे भिजवाते हैं घर? जी। Language plays a major role in a place where you live, So I feel one of the uniqueness of this place is that people have lived there for 30-40 years. Still, they don't speak Arabic. Children who are born and raised in this country, they study Arabic as a compulsory subject. Still, they don't speak Arabic as fluent as they should. फैमिली में तो कितना मालूम नहीं पड़ता, कितना टाइम गुजर जाता है। यहाँ पर मजबूरी है, बस वही उस वजह से है। मजबूरी है ना। Just calling sometimes, mom, then chatting with through Facebook, WhatsApp, through Messenger, like that, mom. Just chatting with them. Okay. And how often do you get to go and see them? 2019, mom. The next time you'll see them is 2019. Yes, ma'am. After 2 years, after my finished contract, and then I will see them again. Obviously, as someone who's in a family of higher socioeconomic status, I think I do have some certain privileges over here. Again, I also have an American passport, which also adds certain privilege. But to say that I guess I would say that I do have some privilege, but not as a person who resides here and who has the nationality of the UAE. बस यही घर है। अब घर वाले भी, हम जो बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो वो यही कहते हैं कि पापा आप अपने घर चले जाएं। अच्छा, मतलब दुबई जब मैं जाता हूँ ना 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद, तो वो कहते हैं आप पापा हमारे घर आए हैं। अच्छा। वो ये नहीं कहते कि ये आपका घर है या आप अपने घर हैं, वो कहते हैं आप हमारे घर हैं, आपका घर दुबई में है, आप वापस चले जाए अपने दुबई में। वो इस तरह कहते हैं। आप लोग की सारी फैमिलीज वापस पाकिस्तान में है? उनको लेके नहीं आए आप? हाँ, उनको लाना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, मैं आपके कॉलीग से बातें कर रही थी। आप भी पाकिस्तान से? अच्छा, ओह, और इंडियन बांग्लादेशी नहीं है कोई? वो इंडियन है। अस्सलाम वालेकुम, आप इंडिया से हैं? आप कहाँ इंडिया में से? हैदराबाद। अच्छा। और आप भी सब एक साथ काम कर रहे हैं? हाँ, एक टीम है आपकी यहाँ पे। अच्छा, और आप क्यों आए यहाँ पे? आपकी भी जॉब थी यहाँ पे, इसलिए आप आए हैं? आप कितने साल से दुबई में काम कर रहे हैं? 7 साल में। अच्छा। If I tell you from my work experience,
The concept of being, UAE national versus non-UAE national is quite official here in this country. We have official forms that we fill at my workplace where there are separate columns for UAE nationals and non-UAE nationals. So that thing kind of, when you face this on a daily basis, you feel you're different from them, not because you want to be different, not because they want you to be different. So the official policy of the country probably keeps you away from having a deep affiliation to this country, because you on a day-to-day basis, you feel that you are being put in a separate column as being non-UAE nationals. वही रूम के लिए मुश्किल है बस. अच्छा. किराया ज़्यादा है रूम. आप कैसे रहते हैं? एक कमरे में रहते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं आप या क्या? एक कमरे में रहते हैं, तकरीबन 10-15 आदमी. Half your salary you send back. Yes. दिल तो यही कहता है बस भाग के चले जाए वापस. क्या चीज़ रोक रही है आपको यहाँ पे? बस यही है ना वो. हाँ जी, वो जाहिर है पाकिस्तान में जाके अगर आप जॉबलेस होंगे, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है तो मुश्किल है ना. आपकी अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो फिर जाहिर है आपके पास कुछ तो होना चाहिए. And we know that we'll have to leave the country one day, and my stay in this country is tied to my job. The day I don't have a job, I cannot stay here. Most of the time, that's the scenario. So, being a realistic person, I know that I'll have to go back. And after having spent 25 years in my home country, my childhood and my youth, I will have problems going back to my country. I understand that. But even though I will have problems, I'll still adjust in my country after a while. But the problem is my children. Like one of my sons, he was born here in this country and he was raised all his life. He doesn't know any other country other than UAE. He is Pakistani passport holder. I don't call him Pakistani in a real sense because, to be honest, he has lived very little in Pakistan. He has visited Pakistan for a few days every now and then. And I don't expect him to have a deep feeling with Pakistan because just by default he has not lived there. He has lived here and he affiliates himself with UAE. पहले मैं सुपरवाइजर था एक फॉर्म में ना, प्रोडक्शन सुपरवाइजर था. अच्छा. हिल ब्रो है उधर सर्जिकल की. आपने एजुकेशन ली भी है सब कुछ? कहाँ आपने पढ़ा? कहाँ पढ़ा आपने? मैंने सियालकोट में ही. अच्छा. सियालकोट में कॉलेज है उधर. कॉलेज में पढ़ा. हाँ जी. आप क्या सोचते हैं मुस्तकबिल के बारे में अपने? बस देखो, अल्लाह ने चाहा तो जितना देगा वैसे ही. पाकिस्तान में हो तो आदमी अच्छा है, अपने घर में अच्छा होता है. Am I right to then conclude that you don't really feel Emirati? You feel at home here, but you know that comes with strings attached. Exactly, I think. Right? You can never fully claim it. That's a very good way to put it, because I definitely love to live here, and I would love to live here for the rest of my life if I could. But at the same time, I know that because of certain things, I won't be allowed to get a passport over here. And that would, make things a bit more complicated. But given the choice, I would definitely stay here for as long as possible. देखने कब जाते हैं? कितनी दफ़ा जाते हैं घर? बस 1 साल बाद जाता है, 1 साल 2 साल बाद जाता है. 1 साल के बाद जाएगा? या वहाँ मैं ट्रैक्टर की ड्राइवरी करता हूँ. वहाँ आप ड्राइवरी करते हैं? ड्राइवरी. अच्छा. अच्छा. आपने यहाँ पे ये नहीं देखा, ड्राइवरी करने के लिए नहीं सोचा? नहीं, बहुत मुश्किल है. फाइल खुलवाना, इतना पैसा 10-15 हज़ार लग जाता है. फिर घर में क्या भेजेंगे? 10-15 हज़ार इधर लगाएंगे तो घर में जो भेजना है, माँ बाप है, बहन भाई है, बच्चे हैं अपने. And what are your long-term plans? Do you think you will stay here or will you return once your contract is finished in 2019? Will you go back home, or would you want to go back home? Would you want to stay here? What are your plans for the future? I want to go for vacation only, Mom, after 2 months, and then I come back here again. Yeah. So that continue again 2 years contract. बड़ा मुश्किल थे वो 6 माह. हाँ, शुरू में तो क्योंकि आप जॉबलेस हो, आपके पास पैसे भी नहीं है, महदूद है, मतलब फैमिली को सपोर्ट भी नहीं आप कर सकते. तो पहले 6 माह तो बड़े हार्ड थे. आपको उन्होंने कोई हेल्प दी? किसी के मतलब आपको क्या रूम दिया? जी कंपनी ने. हाँ जी, कंपनी ने दिया ना. वो पर वीकली हमें देते थे 100 दिरहम खाने पीने के लिए. वीकली 100 दिरहम्स? हाँ हाँ. ओह वाओ. रहाइश तो उनकी थी तो 100 दिरहम देते थे हमें. तो उसके बाद वो हमें उसी में करना होता था, यानी कि उसी में आप गुजारा करते थे. 400 बन जाते हैं महीने के ना पर मंथ. लेकिन वो हमें एज ए डेबिट देते थे.
बाद में फिर उन्होंने हमारी सैलरी से ऐसा काट लिए. And I thank God for being in a privileged class and you know, here in this country, if you are rich, if you have money, your life is much better than those people. So it's not because they're Pakistanis and I'm Pakistani, but I do have feeling for those people. Yeah. And I see on a daily basis those people coming in and sometimes I see them suffering also. और यहाँ पे आप क्या समझते हैं, आपका मुस्तकबिल यहीं पर है या वापस घर जाना चाहेंगे? घर तो घर होता है ना, फिर उसकी बात ही कुछ और होती है ना. I don't use it, but one word comes to my mind is that I would like to call people like myself and others who have traveled across the globe and they have lived somewhere else for a long time. I think we are a global citizen actually.